Ma'am, now meeting is live. You can start now. Okay. Okay, let me know if my screen is visible. Yes, ma'am. Your screen is visible. Okay. All right. So yesterday we were like discussing the deep dive, like we discussed the low level design for our URL shortener service, and then we also did the comparison. अच्छा हमने इसमें डिस्कस किया था कि we discussed the redirection types, and then we did design deep dive where we discussed the data model, hash function, or hash value length calculation. इसके अलावा then we discussed कि हम hash और collision resolution with collision resolution कैसे करेंगे, base 62 conversion को discuss किया था, और फिर हमने pros and cons जो है वो भी discuss किए थे. Okay. Next we need to look at because now we know कि हमने like which hash method we need to use, right? So I hope there is no noise from the background. Let me know if there is. Ma'am, there are some noise, but it's adjustable. Okay. You can speak. Okay. Okay. So then so we know कि हमारे पास like we discussed कि we will probably go with base 62 conversion because this is much more flexible for our design. But definitely it depends. Like we discussed in a system design interview, you have to defend your choice, right, based on your like your trade-offs. You need to be able to discuss the trade-offs with interviewer and defend your choice of implementation. Okay. So next we need to go with the URL shortening deep dive. Okay, so here is example हमारे पास URL की example like we have a long URL example, right? So how will this whole system will work, right? So we will initially have a long URL, and we will check is this long URL already in the database. If that is not in the database, sorry, if that is in the database, then we will definitely return the short URL. We will not send it to our URL shortening server. Otherwise, if it is not there, then we will have to generate a new ID for this long URL, because we are now using we discussed that we will be using base 62 conversion approach, because this will avoid collision. It will also provide us unique ID, right? A unique URL every time. For every new URL, we will be getting a unique URL. And we also want this base 62 conversion instead of this one, because in this approach we saw that we will need a lot of database readings, right? हमें जब भी like यहाँ पे if you see can जब भी if there is this hash value already exists in the DB, then we are going back in a like we may probably be sending multiple calls to generate one long URL, which will also introduce latency. So to avoid all of those things, we will go with base 62 conversion approach. So based on this approach, like we look, so if the database, if it is not in the database, right? Like if your short URL is not in the database, then we will generate a new ID for that long URL based on the unique ID generator, right? And then we will convert that ID to a short URL using base 62, and then we will save that ID, short URL, and your long URL in our database. We also had this like यहाँ पे हमने अपना data model discuss किया था, right? Where we had this ID, short URL, and long URL. So we will store that information in this table. Okay. So here we have this ID, short URL, and long URL that we have stored in the table. And we can probably also discuss the distributed unique ID generator, but there is a separate system design for this one. I don't have currently access to this specific system unique ID generator, because that is for yeah, so that it is this one. So I will probably, once I am done with all of these free accessible system designs, then I will probably purchase or like get the subscription for Byte Bytecoin, then we can discuss these
locked system designs as well. But this is also worth like a good system design to look into. So the unique ID generator is also a like distributed system that we can discuss in a different session. But the thing is that it actually generates a unique like globally unique ID, which we can use to generate to create our short URLs, right? So ये आपकी ना unique IDs को generate करता है, and then you use that for creating your short URLs. Okay. Next thing is the URL redirecting. तुमने URL shortening में देख लिया कि how URL shortening process will work and how the how URL redirecting process will work. Because we had two functional requirements that we were implementing in our systems. Like one was URL shortening and one was URL redirecting. Okay, so in this case, the user will get the like in the URL redirecting, user will send a GET request to our server, right, to our URL shortening server. So what happens in this case is, since this is a स्केलेबल सिस्टम, राइट, हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि हमें इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि वी नीड स्केलेबिलिटी, वी नीड लो लेटेंसी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वी नीड फॉल्ट टॉलरेंस. बट व्हेनेवर यू हैव अ स्केलेबल सिस्टम, उस केस में यू नीड अ लोड बैलेंसर. अच्छा, load balancer, if any one of you hasn't gone through my previous sessions, then we discussed these like how we make our system scalable. We discussed horizontal scaling, vertical scaling, load balancers, and all those things. So you can like look at my first 2 or 3 sessions, like where we discussed these building blocks. I think 3 sessions, first 3 sessions. So load balancer जो है, it will be helpful in scaling our in a in scaling our system, right? So what will happen is, like हमारी जो get request, it will go to the load balancer, and then this load balancer will balance the, like, if you have billions of requests, then probably 100 requests can go on one server, next 100 can go next web server, and so on. So it will load the balance across multiple web servers so that no one server is overloaded. Okay, so यहाँ पे से वेब सर्वर के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट आई, और वेब सर्वर जो है, it will store your it will, if the URL is not present in the cache, right, then it will first go to the database, fetch the get the long URL from the database, and if it is already in the cache, then it will instead of going to the database, it will directly get that from the cache. अच्छा, इसमें हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि we can also have a like we can also, like we discussed कि हम 301 और 302 redirect की जो हमने बात की थी, अगर हम 301 redirect यूज करें तो we can store our store our in that case we can store this into this URL, right? Like we can store it in the browser cache. So we can store this in browser cache, which means that whenever the same user tries to access the URL and it's already in browser cache, then this request will not go here. Load balancer पे भी इस request को भेजने की जरूरत नहीं है. But if it is not there, then definitely it will go there. And we also discussed that we probably do not want to go with 301 redirect, because in that case we discussed case में we lose the analytics tracking. So 302 is I will probably, if I'm in the interview, then I will recommend, I will prefer this one, 302, because in that case we can keep track of analytics tracking. So this also depends on your requirements. You can probably discuss with your interviewer if analytics tracking is important in the system. If it is not important, then we will go with 301, because in that case we are not overloading our servers with extra requests. Okay, so in this case, what happens that if this is a different cache, this was here we had the browser cache, but this cache is different, which is behind the web servers, right? So ये cache वो cache होगी जिसमें हम database reads को avoid कर रहे हैं कि if we have already accessed a URL, then we do not need to go back to the database to get it again. We can just once we have fetched a URL, we can once we have fetched a long URL against a short URL, then we can store that in the cache, and if it is in the cache on the next time, if it's a cache miss, then it will go to database. If it's cache hit, then we will directly serve it from cache. Okay, so next is okay. So this was all about our
this was all about our URL shortening server, and yeah, tiny URL, you can say. So in this case, in this session, we discussed the API design. Like we will be having a post URL and post API and get API. For post for shortening the URL, and get for getting the long URL against a short URL, like for redirecting. And we also discussed the database model, like, and then we will be using relational database instead of in-memory storage. And then we discussed the hash function. Then we discussed URL shortening flow and redirection flow. Additional considerations that we can think about in so once you are in your system design interview, once you are done with your deep dive and all those things, then you can probably also go with some additional considerations that how will, or probably use the interviewer can ask you some follow-up questions. So you can discuss some additional considerations, like how will you rate limit your requests to the server? We also discussed rate limiter in one of the sessions, like how we design the rate limiter. If you are interested, then you can go and look at that previous session where we discussed how rate limiter can be designed. So in this case, we can probably add we can also add a rate limiter to our system, which will protect against excessive requests, and will also protect against DDoS attacks. And we can again track based on these IP, user, and API keys. And we can also filter some blacklisted users or IPs based on this rate limiter. And we can also perform the web server scaling. So this we also discussed in previous session, that how we can use horizontal scaling to scale our systems with increased requests. And we can also do database scaling, where we can do replication for read heavy traffic, because this server is read heavy than write heavy. We discussed that. We assumed that our read to write ratio request is 10:1, which means it is a read heavy server. So in that case, we can perform replication, and we can also do, if it is write heavy, then we can also do sharding for large scale data. We also discussed replication and sharding in our previous sessions. So these are the building blocks. I definitely recommend, if you guys have not, if any one of you haven't gone through those sessions previously, then I would highly recommend that you go through these, because these are the building blocks. इसके बगैर जो है system design के sessions आपको properly समझ नहीं आएंगे. Next thing is analytics. So like we can say that what we want to analyze in our systems, we want to track, we can track clicks, we can track traffic resources and those kind of things. And we can also discuss the availability, consistency, and reliability. We also discussed this in previous sessions, that how we can, we also discussed the cap theorem as well. So like we can, I think this system can be eventually consistent, because the thing is that ये भी हमने discuss किया था, what is strong consistency, eventual consistency, or if we want our system highly available or highly consistent, and what are the trade-offs between these two. So yeah, these are some of the building or major things, how we handle availability and database scaling and those kind of things. ये चीज़ें बेसिकली मोस्टली जनरली रहती हैं आपके सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यूज में, बट जो आपकी ये वाली चीज़ें होती हैं, लाइक आपकी सिस्टम, जो लो लेवल डिज़ाइन एंड हाई लेवल डिज़ाइन, दैट इज़ अ बिट डिफरेंट फॉर ईच ऑफ योर सिस्टम. बट जो ये चीज़ें आपकी होती हैं, लाइक horizontal scaling, availability, and all those kind of things, these are usually similar for all of the system design interviews. Okay. Yeah, I think that's it for this for URL shortening service. Like if you guys have any question, then you can ask, and then we can go with the next service. Yeah. Next system design. तो मैम एक क्वेश्चन था कि जो इंटरव्यूज हैं उसके अंदर किसी यानी कि हमने तो ये चीजें पढ़ ली है ना, जितने भी थी ये हमने देख ली है, तो इसके इंटरव्यूज में चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है, मतलब जो इस तरह सिस्टम डिजाइन में होता है, हमने तो ये सारी चीजें पढ़ ली, अब चैलेंजिंग पार्ट क्या होगा? अच्छा, चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि सबसे बड़ी बात कि टाइम मैनेज करना पड़ता है. 45 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, और उसमें भी आपके पास 10 मिनट्स तो समझे कि इंट्रोडक्शन में या कुछ और चीज़ों में निकल जाते हैं. तो यू हैव काइंड ऑफ, यू शुड कीप एटलीस्ट only 35 minutes in your mind, कि you have only 35 minutes to
propose your system design. So within 35 minutes, it is very challenging to come up with a really good system design. So you have to make sure कि how you manage the टाइम, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मतलब शुरू अगर आपने सिस्टम डिज़ाइन को स्टार्ट किया तो आप रिक्वायरमेंट्स पे ही जो है ना 15 मिनट लगा दें रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करने में और ये वो। सो दैट इज़ मोस्ट चैलेंजिंग। उसके लिए भी हमने लाइक डिस्कस किया था कि हाउ यू कैन मैनेज टाइमिंग व्हेन यू आर इन सिस्टम डिज़ाइन, कि कितना टाइम आप जो है उसको आप रिक्वायरमेंट्स के दिन पे लगाना चाहिए, कितना टाइम आपको हाई लेवल डिज़ाइन पे और कितना लो लेवल डिज़ाइन पे। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है उस चैलेंज से को मिटिगेट करने की कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। वंस यू हैव लर्न सिस्टम डिज़ाइन देन आई हाईली रिकमेंड कि आप फिर ना उसकी प्रैक्टिस करें मॉक इंटरव्यूज के थ्रू। और वो कैसे, जिस तरह आपने कहा प्रैक्टिस करें ना, तो क्या खुद सिस्टम डिजाइन करने के बाद खुद इम्प्लीमेंट करें या किस तरह? नहीं नहीं नहीं, नॉट लाइक इम्प्लीमेंटेशन, मॉक इंटरव्यूज। जैसे मॉक इंटरव्यूज होते हैं ना, क्या यू जस्ट हैव सम मॉक इंटरव्यूज, किसी के साथ भी मॉक इंटरव्यू कर लें कहीं कि भाई मेरा इंटरव्यू लो बेस्ड ऑन दिस सिस्टम डिज़ाइन एंड, और फिर आप उसको देन यू कैन गेट फीडबैक कि हाउ वेल यू आर डूइंग। उसमें आपको ये भी पता चल जाता है मॉक इंटरव्यूज के थ्रू कि हाउ गुड यू आर इन मैनेजिंग द टाइम एंड उस काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, इसमें सिस्टम डिज़ाइन में यू डू नॉट नीड टू प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन, एंड वी ऑल्सो डिस्कस दिस प्रीवियसली कि ये कोर्स जो है इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड कोर्स, दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज, राइट। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, और उसके लिए इतना मतलब वो चीज़ें आप सीखते हैं नॉर्मली व्हेन यू आर इन द बिग कंपनीज। जब आप वाकई में बिग स्केल सिस्टम्स पे काम कर रहे थे, यू लर्न दोस थिंग्स यूजुअली एट दैट टाइम। अगर आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो definitely you will not learn that much if you are learning. So basic thing ये होती है कि your concepts are good, you know how to build good systems, right? So yeah. Yes, Dahika. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इट्स माय फर्स्ट डे इन दिस क्लास। आप मुझे बताएंगे कि ये सिस्टम डिज़ाइन के आप कौन से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रही हैं या कौन से चैलेंज की? अच्छा, सो द सिस्टम डिज़ाइन जो है फैंग में आपने जब जॉब करनी होती है तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, वन इज द लीड कोड इंटरव्यूज एंड वन आर द सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज। लीड कोड जो है उसमें यू आर आस्क्ड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स काइंड क्वेश्चंस, ठीक है। और सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यूज में उसमें आपसे मतलब इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, हाउ यू विल डिज़ाइन यूट्यूब, लेट्स सपोज हाउ यू विल डिज़ाइन ट्विटर एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू आजकल इवन फ्रेश ग्रेड्स के लिए भी कॉमन हो गए हैं। लाइक प्रीवियसली दीज यूज्ड टू बी आस्क्ड फॉर सीनियर लेवल इंजीनियर्स, तो बट अब जो है आजकल एंट्री लेवल रोल्स के लिए भी जो है गूगल, अमेजोन, मेटा वगैरह जो है वो आपसे पूछते हैं, एटलीस्ट एक सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू आपसे ज़रूर पूछते हैं। बाकी जो आपके सीनियर लेवल रोल्स होते हैं उनमें में भी 2 या 3 इतने सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज होते हैं। सो या तो अभी एंट्री लेवल ग्रेड्स के लिए जो कौन से कंपनी इंटरव्यूज ले रही है मतलब? आई थिंक गूगल का मुझे आइडिया नहीं, प्रॉब्ली गूगल इज नॉट टेकिंग, बट माइक्रोसॉफ्ट शायद दिले रही है और अमेजोन भी। आई विल हैव टू चेक, बट अमेजोन का मुझे पता है कि दे डू हैव वन सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू फॉर एंट्री लेवल रोल्स। बट उसमें लाइक जो आपके एंट्री लेवल रोल्स के लिए सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज होते हैं वो इतने ट्रिकी नहीं होते। Like you probably just go with high level system design and those kind of things, but जो senior level roles होते हैं उनके लिए definitely these are very tricky, right? तो हम पाकिस्तान में रहते हुए ये इंटरव्यू दे सकते हैं या ये मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए ये है? अच्छा, इसमें ना आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट मैं बता दूं कि ये कोर्स जो है नॉट स्पेसिफिकली ओनली फॉर इंटरव्यूज, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, राइट। Whenever you are doing job as a software engineer, then it will help you to think like how systems are designed, not only how systems are coded, right? अच्छा, सेकंड थिंग इज के Yes. आपकी जो है ये इंटरव्यूज के लिए, तो वो जो है यू कैन ऑल्सो गिव इंटरव्यूज डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई गॉट द चांस टू इंटरव्यू एट गूगल एंड आई आल्सो गॉट द Okay. चांस टू इंटरव्यू एट अमेजोन। सो डेफिनेटली यू कैन, आजकल मेरे ख्याल से थोड़ा टफ हो गया क्योंकि H1B का कि थोड़ा सा वीज़ा का इश्यूज जो है वो थोड़े यहाँ पे अमेरिका में स्पेशली बने हुए हैं, लेकिन स्टिल यू कैन गिव इंटरव्यूज फॉर यूरोप साइड, बिकॉज दीज कंपनीज आर ऑल्सो इन यूरोप एंड डब्लिन में है और पोलैंड में और हर जगह पे, तो यू कैन डेफिनेटली गिव इंटरव्यूज फ्रॉम देयर। एंड
डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, दे डू गेट द चांस टू इंटरव्यू एट दिस कंपनीज इवन इफ दे आर फ्रॉम इन पाकिस्तान. The challenging part is to get screening, like get your resume screened for those interviews. And I think that is also not that challenging. If you have good experience and your CV is pretty good, then you definitely get the chance to get interviews there. And Sure. secondly, this is also for those ones जो यहाँ पे US में हैं और मास्टर्स कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, they plan to join FANG after completing their masters and PhDs. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. No worries. Okay, if you guys have any more questions, no, and so let me know, then we can move to the next system design. Okay, अच्छा अभी मैंने नेक्स्ट सिस्टम डिज़ाइन की स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं की हैं, बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डायरेक्टली डिस्कस इट फ्रॉम हियर, बिकॉज स्लाइड्स प्रिपेयर करने में ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, बट वी कैन स्टिल डिस्कस इट फ्रॉम हियर. So next is the web crawler, right? Design a web crawler. So what is a web crawler? वेब क्रॉलर का आप लोगों को आइडिया होगा, जैसे वेब स्क्रैपिंग जो है वो एक टाइम पे काफ़ी हुई हुई थी इन इवन अभी भी बिग कंपनीज जो हैं, जैसे बहुत बड़ी कंपनीज है, गूगल जो है वो वेब क्रॉलिंग करती है या अमेजोन, तो ये बहुत बिग स्केल पे करती हैं, राइट? नॉर्मली छोटी कंपनीज इतने बिग स्केल पे नहीं करती, बट डेफिनेटली जहाँ पे ये बिग टेक कंपनीज आ जाती हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग ऑन लार्ज स्केल. जो भी उनके सिस्टम्स होते हैं, दे आर बीइंग बिल्ट ऑन अ वेरी बिग स्केल. सिमिलरली इनका वेब क्रॉलर भी है, दैट इज ऑल्सो बी ऑन अ बिग स्केल. Usually, first of all, what is a web crawler? Web crawler is kind of a robot or spider, right? मतलब जिसमें आपका जो है ना, it is a kind of a robot, या जो कि आपके ना या एक autonomous system है which is crawling the websites. मतलब वेब के ऊपर जाके multiple websites को ये crawl करता है और crawl करके वहाँ से contents को जो है ना ये gather करता है. तो लेट्स सपोज इफ यू हैव अ वेब क्रॉलर जिसमें वो उसके पास ये 3 वेबसाइट्स हैं, उसने इन तीन वेबसाइट्स को क्रॉल करना है, उनमें से कंटेंट्स जो है ना उसको उसने गैदर करना है. ठीक है, ये दिस इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर मल्टीपल पर्पसेज. यूएससी के किन पर्पसेज के लिए दिस इन्फॉर्मेशन वेब क्रॉलिंग किस लिए हमें ज़रूरत जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ती है. सो इसमें हमारे पास लाइक लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 वेबसाइट्स हैं, A.com, B.com एंड C.com वर्ल्ड वाइड वेब पे. सो अब क्या होगा कि वेब क्रॉलर विल not only just read the home pages of these websites, it will also navigate through the links, internal links. जैसे आपकी websites के ऊपर navigation links होते हैं जिसमें you can visit multiple pages, right? So when you are crawling a web web page, then you probably want to crawl multiple pages of that website, because you cannot get all of the information on your home page, because it is scattered on multiple pages. So what you do is, okay, for each of these websites, it will go into those internal links. फिर internal links के अंदर further there can be more pages and all those kind of things. So based on this, it just crawl those URLs and gets the information from those pages. So this is what your web crawler does, and like it just collects a few web pages and then it follows the links on those pages. अब हो सकता है lime.com के अंदर भी कोई और links हो which are meaningful for us, and then it can further crawl those pages as well. Okay, so why we need a crawler? First thing is that we need it for search engine indexing. Like you guys already know कि Google का जो search engine है, it is like very scalable system. It's a very big system. इसका भी design maybe probably we can discuss if we get some time in the ends of the sessions. But search engine is a really big system, right? So the web crawler जो it might be needed for search engine indexing. अच्छा, इसमें जो है हमारी दिस इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़ केस जिसमें आपको सर्च इंजन इंडेक्सिंग करनी होती है. तो इसमें आप वेब पेजेस को क्रॉल करके यू कैन क्रिएट लोकल इंडेक्सेस फॉर सर्च इंजन, और फिर वंस यू हैव क्रिएटेड द लोकल इंडेक्सेस फॉर सर्च इंजन, इट इज़ वेरी फास्ट टू एक्सेस द वेब पेजेस विद इंडेक्सेस, right? So you can use it for search engine indexing. And one example is this Google bot. So Google bot जो है, it is the web crawler behind Google search engine. Google search engine की indexing के लिए this is the web crawler, and definitely Google bot is a big system. It's not a small one. Um,
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इट कैन बी यूज फॉर वेब आर्काइविंग. यू प्रॉब्ली हैव कि आपके पास काफ़ी सारे वेब पेजेस होते हैं, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम सम वेबसाइट्स जो हैं वो आपकी रिमूव भी हो जाती हैं, राइट. यू डोंट नॉट नीड नो लॉन्गर नीड दोज वेब पेजेस, सॉरी वेबसाइट्स. बट द थिंग इज यू वांट टू sometimes archive the information from those web pages, right? So in that case you can use it for web archiving as well, especially for to preserve the data for future uses, or maybe you article too, I think what companies are doing, that they are gathering this information, archiving this and using that to train AI models as well. So it is can also be used for web archiving. It can be used for web mining, जिसमें you can if you are aware of data mining, तो data mining में what you do is you discover useful knowledge from the data. So web mining में क्या करते हैं कि आप useful knowledge को discover करते हैं from the internet. So again this can be used in web mining, AI and a lot of things जिसके अंदर भी this web crawler can be helpful for you. Web monitoring में भी it can be helpful, right? So you can use it to discover pirated works and reports, or you can discover copyrights, and maybe you can also discover some anomalies in some frauds and those kind of things from web monitoring. Yeah, so these are some of the few use cases that can be used where crawler can be used, right? Okay, so now we know that. Yes, Ifan. मैम ये जो सिलेनियम है, Hmm. सिलेनियम जो एक हमारे पास है, वो वेब क्रॉलर क्रॉलर है सेलेनियम क्रॉलर मुझे आइडिया नहीं है. मैंने सेलेनियम तो जो वेब स्क्रैपिंग करते हैं. आई थिंक प्रॉब्ली. हाँ, तो वो जो वेब स्क्रैपिंग करते हैं, वो एक तो एपीआई स्क्रैपिंग होती है ना, जो हाँ. कल आपने बताया था ना, यस. और एक वेब स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग होती है. इन दोनों का खैर मुझे आइडिया नहीं कि फर्क है, बट क्या ये उसी ये क्रॉलर ही होता है जो वेब स्क्रैपिंग होती है उसमें? हाँ. यस, एग्जैक्टली. सॉरी. हाँ. या, तो you're right, क्रॉलर ही होता है. वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रॉलिंग, क्रॉलर इट्स काइंड ऑफ सिमिलर थिंग, जिसमें आप मल्टीपल पेजेस को स्क्रॉल करके वहां से, सॉरी, क्रॉल करके वहां से यू आर scraping those web pages to get the information, right? In fact, web scraping is a part of a web crawler, right? कि आपका बोट क्रॉल कर रहा है and then to scraping those web pages to collect the information. इसको हम इधर भी इसके जब डिजाइन डिस्कस करेंगे तो we will see कि how we get the information from those web pages. Yes, Hamza. यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हम लोग कहते हैं कि एलएलएम जो ट्रेन हुए हैं वो बहुत सारे डाटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं, और वो इंटरनेट के ऊपर जो डाटा था उसको स्क्रैप करके और उन्होंने अपने मॉडल्स ट्रेन किए हैं. Yes. तो वो लोग जो मतलब अब जिस तरह आपने बताया कि जो गूगल है ये भी इसका अपना एक स्क्रैपर है, और वो स्क्रैप करके और हमें जो है वो आंसर देता है, और जो बाकी कंपनीज हैं बड़ी बिग टेक उन्होंने भी स्क्रैप किया है. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम कोई क्रॉलर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं खुद 2-3 दफा जो है ना वो एक मतलब प्रोजेक्ट्स थे उन पे मैंने क्रॉलर लिखा था सिलेनियम से और अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी से. तो जब हम लोग लिखते हैं तो वो आगे से जो है ना वो कैप्चा आ जाता है या बॉट आ जाता है और वो हमें क्रॉल नहीं करने देता. Yes. तो वो मतलब ये हमें हमारे लिए क्यों इस वजह से रिस्ट्रिक्शन है, और बाकी उनके लिए क्यों नहीं है? वो डाटा कोई भी स्क्रैप कर सकते हैं, कोई भी अनलॉक कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? The thing is कि देखें, जब बिग टेक है ना, they have the authority, right? They have the authority and उनके पास ऑलरेडी सारी चीज जो है, उनका सेंटर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में वो चीजें ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल हैं. They have the authority, even Google's engine के ऊपर, they can bypass those जो भी restrictions है, they can definitely bypass. Although this is not legal, but still companies do this because there is no one to ask them. छोटी कंपनीज को अलाउ इसलिए नहीं करते कि आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है ना, कोई किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना कर लें. बट द प्रॉब्लम इज कि बिग कंपनीज आर डूइंग दिस and everyone knows this, that they are doing because they have authority. No one can challenge them. So that's the reason that when someone who is in a small company and trying to scrape web pages, they are unable to do this, but big companies are still doing that. मैम इसमें मैं भी कुछ ऐड कर सकता हूँ? Yeah, sure. ओके सर, मैंने भी ना इसके बारे में जब पहले पढ़ा था, सुना था, तो उसके बारे में ये था कि ये जो बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे गूगल है या ये बड़ी कंपनीज, इनके पास जैसे मैम ने बताया, इनके पास अथॉरिटी तो होती है,
ये ना अथॉरिटी इस तरह लेते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं ना, उन उनसे ये कहते हैं, ये उनकी सर्टिफिकेशंस लेते हैं, इनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, तो ये उन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ये करते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि ये लोग कहते हैं कि अब कोई वेब पेज बना फॉर एग्जांपल, अब उसके अंदर किसी ने मलिशियस कोड डाल दिया, ठीक है, अब वो पब्लिश होगी क्योंकि उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो फिर क्या होगा, फिर कोई भी जो बंदा एक्सेस करेगा ना वो फंस जाएगा, यानी कि वो हैक हो जाएगा। तो फिर ये जो बड़ी बिग टेक कंपनीज होती हैं ना, ये इस चीज़ का लाइसेंस लेती है उनसे कि हम इसलिए क्रॉल कर रहे हैं, हम चेक करेंगे वेब पेजेस के ऊपर कोई मलिशियस कोड या मलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। Yeah, that's a very good insight you added. You are totally right. The big companies and definitely अब आपकी small company जैसे कोई छोटा सा startup start किया and they are saying okay, I am going to do crawling on the web pages. जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, यू कैन नॉट प्रूव कि यार आप जो है कुछ मतलब like you are not getting some sensitive information or that can and you are not causing any harm, राइट। जब तक आपके पास वो लाइसेंस नहीं होगा, यू आर डेफिनेटली नॉट अलाउड टू डू दैट। इवन कुछ स्टार्टअप्स में जैसे ओपन क्लॉ है इस टाइम, तो ओपन क्लॉ इज ऑल्सो डूइंग एंड उसकी भी जो है रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर हो गया गिटहब पे। काफ़ी ज़्यादा उसके स्टार्स जो है ना, अभी मेरे ख्याल 2 वीक्स के अंदर उसके अंदर काफ़ी स्टार्स उनको मिल गए हैं वहाँ पे। सो आई थिंक दे ऑल्सो हैव द लाइसेंस टू परफॉर्म द वेब क्रॉलिंग। यस मैम, दे आर वेरी, वो बहुत महंगे होते हैं लाइसेंस। एग्जैक्टली। मैम बट ओपन फ्लो जो है वो वेब स्क्रैपिंग तो नहीं कर रहा, वो तो हमारे सिस्टम के अंदर जो है ना वो मतलब वो एक ओपन सोर्स है और वो उसको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके तो हमारे सिस्टम की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उससे असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो फाइल सिस्टम है, हम लोग कुछ भी डाउनलोड्स करते हैं और हमारे डाउनलोड फोल्डर में आ जाते हैं और फिर काफ़ी टाइम के बाद जब हम उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या कहीं पे भेजना चाहते हैं तो हमें समझ नहीं आती। तो बेसिकली हम मतलब ओपन क्लाउड के बारे में मैंने जितना पढ़ा वो ये है कि वो आप जो है ना अपने सिस्टम में जिस तरह एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं ना, व्हाट्सएप हो गया या और भी हो गया, उस तरह आप उसको इंस्टॉल करके और उसको कमांड देके तो वो आपके सिस्टम पे चलता है। वो पॉपुलर इसी वजह से हुआ है, उसकी गिटहब के स्टार्स इस वजह से हुए हैं कि वो आपके सिस्टम पे चल रहा है बजाय ये कि वो क्लाउड पे चल रहा हो। नहीं। अच्छा, मैंने खैर शायद ओपन क्लॉ नहीं, मैं शायद किसी और की बात कर रही थी। ओपन क्लॉ नहीं था, एक और था वो। दैट इज नॉट, मेरे मिक्स हो गया क्रॉलर की वजह से। दैट इज समथिंग एल्स प्रॉब्ली। आई विल जस्ट लुक एट दैट अगेन बट या सॉरी, वेयर डिड दैट गो? How did it get closed? Okay. All right, so once you have got the problem, right? Yeah. So you know that you have to design a web crawler, right? So you will first thing, yeah, that you are doing in every system design interview is that you are understanding the problem and then you establish the design scope. How you understand the problem, you discuss the requirements with your interviewer, right? Once you are done with the requirements, then you go with and you then because we discussed in previous session as well, you cannot have a very open scope. Wait a second, I just need to get a call. Just a minute, yeah. Um, Okay. Second thing is that you get the requirements and then you design the scope. Usually you cannot have a very a big scope because you have only 35 minutes to have a system design, right? So that's why you have to have a limited, you have to discuss a scope that is limited and can be discussed within those 35 minutes.
Right. So for that purpose, you can ask some questions with your interviewer. First, we can discuss what is the basic algorithm for web crawler. Very simple is that you just give like you have given a set of URLs और आप जो है उसको के through अपने web pages को download करते हैं URLs के through. And once you have downloaded all of the web pages, मतलब इनिशियली आपके पास एक URL सीड होती है जिसमें लेट्स सपोज इनिशियल कुछ वेब पेजेस हैं, you have just downloaded those web pages and then extract URLs from those web pages. So once you have extracted URLs from those web pages, then you can add new URLs to the list of URLs. मतलब इसको भी we'll discuss कि किस तरह वेब क्रॉलर में आप जो है इसको करते हैं because you have a hierarchy of pages. तो हर पेज के अंदर you can have multiple links and then you can go to that page, download that page and then get more links and add to those your new URLs links. This is very simple, although it seems like the basic algorithm for a web crawler is simple, but it's not that simple because the system is too big. So because eventually it is scraping a lot of pages from the web. If it is for a very small project, for example, if you are doing it as a undergrad project, then definitely it's a very simple one. You are just writing a simple algorithm. But if you're talking about Google bot, then definitely this is a very complex system. Okay. So here, like you can discuss with the interviewer, like what is the main purpose of the crawler. Like in the previously discussed, yeah, there can be multiple purposes of this. There can be multiple use cases. It can be used for search engine indexing, can be used for web archiving, monitoring, etc. So let's suppose your interviewer says that it needs to be like we need it for search engine indexing. And then we need to know like how many web pages we will need to collect per month, because traffic matters a lot whenever you are designing big systems. So you have to discuss the traffic with your interviewer so that you can do the back of the envelope estimations. So let's suppose you need to scrap 1 billion pages per month. And then we also need to know like what content types we will be scraping. For simplicity, we can for now say we just only need HTML, but definitely real systems may you are scraping a lot of things. You are scraping videos, images, PDFs, and many other types of contents. But for now, let's say we are to keep the system simple, we are saying we only need HTML. And we can also discuss can we use newly added or edited web pages as well. Definitely we can do that. We need to consider that like right. So whenever a new web page is added, a web crawler should be able to crawl that page as well. Or even if a web page previously crawled web page is edited, then it should be able to crawl that as well. And we will also discuss that how we will handle the duplicate content, because okay, website के ऊपर like internet के ऊपर there is a lot of duplicate information. So आपका सिस्टम इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो बार बार डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन को बार बार प्रोसेस कर रहा है या इवन स्टोर कर रहा है डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन को, बिकॉज दैट विल जस्ट बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. So your system should be good enough that it can handle duplicate content and avoid processing the content that is already being visited. So these are some of the few requirements that we can discuss. This is just the scope for our system. Like this many pages we need to do. It's only for search engine indexing, and like how if we have to in scope, we also discuss that we only need to like get the HTML content type, not any other type. And then we can, once we have discussed these functional requirements with the interviewer, then we can discuss the non-functional requirements, that what is important for our web crawler. So definitely scalability matters because the web is very large, and we also discussed this like we discussed like this, we need to crawl 1 billion pages per month, which is a lot, which means traffic is big, high. So for that purpose, we need to add scalability to our system should be scalable, right? And since there is and हम जो जी दो चीजों में कंफ्यूजन है ना, एक है वेब वेब क्रॉलर और दूसरा जो एपीआई जो कॉल होती है, यस वो भी तो हम वेबसाइट को ही की ही जो है ना चीज होती है ना, वहां से एपीआई को कॉल करते हैं. तो इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, क्रॉलर का भी आपकी जो इस्तेमाल करते हैं और एपीआई का भी इस्तेमाल करेंगे मैम. वेब स्क्रॉलिंग जो आप वेब क्रॉलिंग करें ना, दैट इज अ फुल होल सिस्टम. उसके अंदर जो आपकी एपीआईज हैं, एपीआईज के थ्रू यू आर गेटिंग, लेट्स सपोज आप वेब स्क्रैपिंग करें सिर्फ एक स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर जाके, राइट? सो दैट इज काइंड ऑफ
स्क्रैपिंग यूजिंग एपीआईज, क्या आपने, और यूजुअली स्टैंडर्ड यही होता है कि आप एपीआईज के थ्रू जो है ना अपनी वेब्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, राइट? मतलब आप पेजेस को गेट कर रहे थे। वेब क्रॉलर क्या चीज़ है कि वेब क्रॉलर इज अ बिग सिस्टम, राइट, विच हैज़ एक्सेस टू अ लॉट ऑफ वेब पेजेस, राइट? और उन वेब पेजेस को सिर्फ ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस करके, ये भी जब इसका डिज़ाइन डिस्कस करेंगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि यू आर गेटिंग एक्सेस टू मल्टीपल यूआरएल्स, और उस यूआरएल्स के बाद अंदर जाके देन यू आर यूजिंग इन इसके किसी एक कंपोनेंट में यू आर यूजिंग एपीआईज टू कलेक्ट गेट द इंफॉर्मेशन, राइट? So web crawler is not only doing scraping on one web page, it is collecting links from multiple web pages. It is crawling a lot of web, like it's kind of crawling wide web, not like, okay. So it's not crawling like every single thing on the website, but some of the seed URLs that you have added initially to scroll to crawl, it is actually crawling those ones. Yes, Hamza. Uh, मैम कैन आई ऐड समथिंग फ्रॉम माय? yeah, sure. जो एपीआई है ना, वो मतलब हमें है क्या? बेसिकली एपीआई डिजाइन कोई कंपनी क्यों करती है, या कोई भी वेबसाइट है वो किस वजह से जनरेट करती है? वो इस वजह से करती है कि वो कुछ डाटा जो है वो आपको असेस देना चाहती है। फॉर एग्जांपल कि मैं कुछ जो है ना वो एंड पॉइंट्स रिलीज कर देता हूँ, और वो एंड पॉइंट्स को असेस करके कोई भी जो डाटा मैं शेयर करना चाहता हूँ बस सिर्फ वो ले सकती है। लेकिन मुझे अगर पूरी वेबसाइट चाहिए, और वेबसाइट पे अब जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ा है कि हमें कौन सा कंटेंट जो है ना वो इंक्लूडेड होता है, तो हम एच टी एम एल ऑनली, अब ये जितनी भी हमारे पास वेबसाइट्स लिखी हुई होती है ना, बेसिकली जिसकी बैक एंड पे कोडिंग होती है वो एच टी एम एल होती है। तो HTML के अंदर जो है ना वो हम जब जो भी हम क्रॉलर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सिलेनियम से लिखते हैं, या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, या और भी कुछ होते हैं, तो हमसे जब हम उनसे लिखते हैं तो वो बेसिकली HTML जो है ना वो फेच करता है। HTML फेच करके जो भी लिंक्स होते हैं, जो भी डाटा होता है उसके अंदर, मेटा डाटा होता है, कंटेंट होता है, इमेजेस होते हैं, जो भी उसका सब चीज़ होती हैं वो फेच करता है। लेकिन जो API की होती है वो सिर्फ, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में कुछ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिस तरह मैंने क्योंकि काम किया था, तो हॉस्पिटल का डाटा इकट्ठा करने के लिए ना उनकी पूरी एक वेबसाइट है, उसमें हर हॉस्पिटल हर डॉक्टर का डाटा है। तो वो अगर हमने असेस करना हो तो उन्होंने एपीआई हमें दिए हुए थे कि हम एपीआई से डॉक्टर्स की क्या क्या इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। लिमिटेड इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरा उनकी जो वेब पेज है उसका हर चीज़ फेच करना चाहते हैं जो उन्होंने हमसे नहीं भी शेयर की हुई, तो उसके लिए फिर हम क्रॉलर लिखते हैं, और उस क्रॉलर से जितनी भी HTML के अंदर डाटा होता है, वो सारे लिंक्स हो गए, या आपके पास रिटर्न फॉर्म में कोई टेक्स्ट हो गया, या जो भी मेटा डाटा होता है वो सारा हम फेच करना होता है, तो उसके लिए फिर हम क्रॉलर लिखते That's a very great ओके explanation, थैंक यू। Hamza. Um, yeah, I really appreciate that whenever someone is asking questions, please participate, especially if you have good knowledge in that specific domain. So thank you. Yeah. अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट जो है, if does anyone has any other question? Okay. Next is back of the envelope estimation. And now we have designed our, okay, sorry, we were first discussing these non-functional requirements that we need scalability, we need robustness. Like we don't want कि हम कोई ऐसा content access करें which is not good. या जैसे it can be bad HTML, or there can be malicious links, etc. So these are some of the edge cases that our web crawler should be able to handle. And then politeness is like, it's like your crawler should not be very aggressive. It shouldn't be like it is making a lot of requests in a short time interval. It should be like polite enough to make only few, like as those many requests as to avoid overloading web servers, because web crawler is what it is doing. It is sending requests to your websites, right? जहाँ पे आपकी वेबसाइट्स होस्ट हुई हुई हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर ये रिक्वेस्ट सेंड करा है, तो इफ it is too aggressive, then it can overload the servers. जिन जिन clients की websites हैं, उनकी websites के ऊपर it can cause overload, and can like उनके systems को it can जो है ना ये down भी कर सकता है, तो it shouldn't be doing that, right? अच्छा, उसके बाद आपकी जो है extensibility, like
Extensibility, okay, if you have you have to make some changes in the future to your crawler, then it should be good enough. Like it's not like अगर आपने आज HTML की इसके अंदर फंक्शनैलिटी डाली है, कल को आपने PDFs या कुछ और टाइप का कंटेंट जो है वो आपने कलेक्ट करना है, तो इट शुड बी मतलब without making a lot of changes to your system, it should be extensible, right? Okay, and next is the back of the envelope estimation. So we have already discussed like how many pages we need to download every month. We know that there are 1 billion web pages. So based on this, we can calculate the queries per second, because whenever we are doing the back of the envelope estimations, we are doing it based on the per day storage and or queries per second, etc. So queries per second will be required because we have 1 billion web pages, which means for per second, we will divide it by 30 days, 24 hours, 36 seconds, which means we will need 400 pages per second. For peak query per second, we can assume that we have the load is double, right? So if the load is double, then peak queries can be 800, but this will not be, this might be rare because we know that our, like, this is the traffic that is coming to our system, right? So but still we've calculate this peak QPS, because what happens in this case के हमने क्योंकि per second निकाली है ना 400 pages per second, तो हो सकता है कि किसी सेकंड में आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, किसी सेकंड में आपके पास ट्रैफिक कम आ रही है. So you have to be make sure कि आप सिर्फ 400 based on this calculation you can now say that every second आपके पास इतनी ही जो है ना रिक्वेस्ट ट्रैफिक आएगी. हो सकता है किसी सेकंड में कोई भी ट्रैफिक ना आ रही हो, नेक्स्ट सेकंड में कोई बर्स्ट ऑफ ट्रैफिक आ जाए. These are also the things that we also discussed in the rate limiter कि आप burst of traffic को कैसे avoid करते हैं rate limiting में. Like you not want to send too many requests in one specific second and those kind of things. If you want to learn rate limiter, then we discussed in that previous session. So you find out the peak queries per second, and then you assume that कि आपका web page जो है average web page size जो है that is 500 kilobytes. So if it is 500 kilobytes, then to store 1 billion pages, we will require 500 terabyte of storage per month. And let's suppose if we want to store the data for 5 years, then we will need it, like we need to store 500 terabytes of data for 12 months, and for 5 years, we will need 30 petabytes of data, 30 petabytes of storage that we will need. So this is too much storage, and based on this, we will decide that which storage will be best for us. So you have done this back of the envelope estimation, and based on these estimations, you will once you design your system, then you will discuss discuss which approach you will be using to make sure that you are able to store this much data and efficiently access that data, and if you need sharding, scaling, all those things. So once we are done with the back of the envelope estimation, then next step is to go with high level design. So you discuss the high level design, like how we will be designing your web crawler. So इसमें भी this is since web crawler जो है इसके अंदर multiple components होते हैं इसके, like it has seed URLs, URL frontier, and these kind of, there are multiple components that these can be different services as well, because if the system is really big, then you want these to be separate services, right? URL frontier is a different microservice. HTML downloader is a different microservice. So we will also discuss microservices in some other maybe session. But I think you guys might probably already be aware of microservices कि एक तो आपकी monolithic repository होती है ना, जिसमें आप सब कुछ है जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो एक ही रिपो में डाल देते हैं. बट माइक्रो सर्विसेज जो हैं दीज आर हेल्पफुल इन बिग सिस्टम, जहाँ पे आपके सिस्टम्स नीड्स टू बी स्केलेबल. इसमें ये होता है कि आपकी जो like different microservices communicate with each other, and there is little to no dependency between these different microservices. उसमें ये होता है कि एक specific component जो है it is doing one specific job, other specific component is doing different specific job. So microservices are a very important part in your designing your systems and scaling your systems. So you can consider these as microservices, but for now, let's just think these are some components in your system that you need to, and how you will these systems, like how these systems will communicate together to make your full web crawler. So first component is the seed URLs component, right? So इसमें आप क्या करते हैं कि ये like you need a starting point, right, in your crawling process. So you need to decide कि what URLs you need, because but you cannot just get some random URLs from the website and you say okay I will start
scrolling the web pages now. No, you can't do that. You need a starting point. So for example, probably you are you can you want to collect information related to health data. You want to collect information from different type of websites, right? So you just select some good seed URLs, right? So what you can do is like yeah, so what you can do is you can get it from, you can get it based on locality, like from different countries. So you can say, okay, my seed URL, my seed URLs will be like, I will have, for example, 4 URLs from USA, 3 URLs from Canada, and those kind of things. Although this is very small amount that I'm talking about, but in real web crawler, this is the seed URLs might be really, might be a lot of URLs, right? Okay, so and you can also, what you can do as well कि CDRL में you are deciding कि आपने किस countries से जो है URLs अपने इसमें ऐड करनी है, कितनी आपने URLs ऐड करनी है कंट्री से, और फिर कौन सी specific URLs you have to select. Like you can do this based on some topics. You can say, okay, I want to probably get some URLs from shopping websites. I want to get some URLs from healthcare websites, etc. So based on this, you can probably also decide the priority and how many number of URLs you need. So this is what you are doing your seed URLs component, that you get a starting point and you add those URLs in your this component. So once you're done with adding URLs in your like once you have got these seed URLs, then you can start crawling, right? So you can start crawling. You have first seed URL, you started crawling it. Definitely can do that in parallel. Like you can in parallel you can probably crawl. You can probably crawl, let's suppose, 1,000 URLs per second. Those kind of things. So you will crawl that crawl those URLs, and then you will download those. So so you will first so your seed, you in your seed URL you have collected all of those URLs, and now you are going to crawl those and download those web pages, right? So once you have downloaded those web pages, sorry, not exactly downloaded. This is just your seed URL, so it will get all of your URLs, and then URL Frontier will keep all of the URLs that needs to be downloaded, because probably you do not need every single thing to be like every single link to be downloaded. अगर आप एक वेब पेज के ऊपर गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस वेब पेज पे जितने भी लिंक हैं वो सारे के सारे के से आपने इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डाउनलोड करनी है. You probably only need some specific web pages. You probably don't need home web page to download. So उसमें आप जो है जो आपको लिंक इम्पोर्टेंट है, you will just get those links, and those links will be present in URL Frontier. कि जिन लिंक्स से हमने डेटा, जिन लिंक वेब पेजेस को हमने डाउनलोड करना है, उनकी URLs will be added in URL Frontier. Seed URLs has only the URLs that you need to download for web pages. URL Frontier में you not only have the URLs for starting points for web pages, it also has URLs for the links within the web pages, right? So this has all of the URLs. Like we will discuss कि हाँ कैसे हम further links इसके अंदर add कर सकते हैं, because this is a loop that is going on. कि अगर आपने एक web page को visit किया है and you have got, for example, 10 links from that web page, then you add all of those links in your URL Frontier. So you will add those in here. I think we should probably discuss this tomorrow because this has like this web crawler has a lot of components. So we will discuss this because we are about to end the session. Like we have only 1 minute left. So if you have any questions, then please ask, and then we can end the session. If no one has question, then we can end the session. Okay. All right. So Thank you इसको so हम much. further discuss करेंगे. Thank